हेलो क्रिएटिव पीपल। तो बहुत सारे लोगों का ना अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को लेकर इश्यूज़ रहते हैं कि गेमिंग लैपटॉप है, अच्छी क्रिएटिव मशीन है, लेकिन फिर भी अप टू द जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं दे रही है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर या फिर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीपीयू। सो यहाँ पे हमें देखना होगा कि डू वी हैव द लेटेस्ट ड्राइवर्स जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर आप एक गेमर हैं या फिर आप एक क्रिएटिव वीडियो एडिटर या जो भी वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, तो जीपीयू मेन रोल प्ले करता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ यू कैन फिगर आउट विच ड्राइवर्स यू हैव, वेदर दोज आर अपडेटेड और नॉट। अगर अपडेटेड है दैट्स गुड इनफ, अगर नहीं है तो हम उन्हें किस किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं और आपके वर्क के अकॉर्डिंग कौन से सुटेबल ड्राइवर्स है। सो आज हम डिस्कस करेंगे NVIDIA के ड्राइवर्स, द वन आई हैव इन माय सिस्टम। टू फिगर आउट विच ग्राफिक कार्ड डू यू हैव, you can tap Control Shift Escape from your keypad, or you can just type Task Manager in your start menu, Task Manager. And once you have the Task Manager, go to Performance tab, the second tab there, and in Performance tab at the bottom you will see GPU. So it says NVIDIA GeForce RTX 3060. That's a GPU I have on my machine. And to figure out the driver date when the drivers are enabled here, just maximize the tab, and at the bottom right corner you will see the driver date. So it says 12/3/2024. So that is from the March of this year. So I'm sure it's been 3 months since I updated this. So there must be an update available. So 2 options to check out for the update and to install the updates. One is, if you have the GeForce Experience application, you can open that. That's a application offered by NVIDIA. So I just type GeForce in my start and I have GeForce. So the one option is from here, and the other option, if you don't want to go from here, you don't want to put your emails and all, you can simply go to web and just type NVIDIA drivers download. And the first website, the URL you will see is from NVIDIA drivers download. Just open that one, and here it will ask you about your product information. What kind of card do you have? So we have GeForce and we have RTX 30 series. So the same you need to put here, and then the model number, that was 3070. We have Windows 11. You need to select your OS, and that's the important type. It says download types. So there are 2 kind of drivers. The one is game ready and the other one is studio drivers. So while working with creative apps like editing applications, Premiere, DaVinci, or like VFX and all such things, they need studio drivers because they are specifically designed for the creative applications. But if you are a gamer, then you need game ready drivers. So make sure you check this out. So I selected studio, search for it, and now this says we have a new driver available, that is version 555.99, and that was released on this month, 4th of this month, 4th of June. And the file size is 6.28 MB. You can see here. If you want to check more highlights regarding this update, regarding this, so here it says CUDA 125 does not work, CUDA enabled, Microsoft Teams, all these things are fixed here. So you can just click on download. First we are downloading the drivers, then we're gonna install it, and after installation we need to perform a system restart to make the changes active, so it can enable the I would say the latest drivers. Alright, so the drivers we have downloaded here, just double tap on that for the installation process. It's gonna ask you a permission, just allow location. Make sure before you do this thing, you can close all of your running applications. If you have something to save, you can save and then start the installer. Specifically, if you have any application that needs the GPU involvement, like any creative or any gaming application. So half of the process is going on after a restart. It's gonna take a little long, so be patient here. This will take around 2 to 5 minutes. And here, if I go to Task Manager now and go to driver date, it says 1st of June 2024, and that was the drivers available from the NVIDIA website. And the other option to check this is go to Device Manager. You can even type Device Manager on the start menu.
and go to display adapters, and there you will get the NVIDIA. Go to properties, drivers, and there you will see the driver date. So that has been updated, and that's all you have to do. Let's do a quick recap. So इसमें क्या था, पहले हमें फिगर आउट करना है कि हमारे ड्राइवर्स अपडेटेड है या नहीं है. पहले हमने चेक किया कि कौन से हमारे ड्राइवर्स हैं. देन वी गो टू द NVIDIA वेबसाइट, वी चेक आउट अगर नए ड्राइवर्स अवेलेबल है तो. वी नीड टू मेक श्योर हमारे यूजर्स के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे ग्राफिक ड्राइवर्स या फिर स्टूडियो ड्राइवर्स. वी जस्ट नीड टू डाउनलोड दैम एंड गो थ्रू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और उसके बाद एक रीस्टार्ट करना है ताकि चेंजेस एक्टिव हो जाए. इट विल एक्चुअली आस्क यू बाय इटसेल्फ after the installation. And उसके बाद just to confirmation you can check out in task manager और device manager. ड्राइवर डेट से आपको पता लग जाएगा कि आपके ड्राइवर्स अपडेट हो गए हैं या नहीं है. उसके बाद आप अपने एप्लीकेशंस का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग वेल. इफ यू आर स्टिल फेसिंग एनी सच इश्यूज, एनी परफॉर्मेंस relevant to the GPU and all, you can tell me in the comments below. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.